गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ई श्रम पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एनवायरनमेंट एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम्स जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के उनको प्रोसेस करना शुरू कर देंगे वो, क्योंकि जो है ई श्रम पोर्टल पे ऑलमोस्ट 27 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अब आपको पता ही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा कंट्री में कितना बड़ा है। 90% जो टोटल एम्प्लॉयड लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। तो अब गवर्नमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से जो भी यूनिट्स 10 से कम वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है और जो है उनको हम कहते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर वो जो है ESIC और EPFO के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, वेज वर्कर, कोई भी जो है आपके, अगर वो ESIC या फिर EPFO में जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उनको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर मानते हैं। तो इन्हीं के लिए जो है वो नेशनल करियर सर्विस भी एक निकाला गया था 2015 में, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ताकि एम्प्लॉयमेंट और करियर रिलेटेड सर्विसेज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दी जा सके। सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए नहीं, सारे सिटीजन्स के लिए निकाला है इसको। और जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को जो है वो आपस में मिलाते हैं, ट्रेनिंग जो है ये सब फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। तो बेसिकली करियर से रिलेटेड जो भी तैयारी है वो कराई जाती है। अब ई श्रम पोर्टल जो है वो पर्टिकुलरली आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए, जिसको 2021 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, 12 डिजिट का यूनिक नंबर बना के देता है ये। और इसमें होगा क्या कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट फ्यूचर में देना चाहती है। अब इसके अंदर जो है वो पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स, लेबर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट्स, ट्रेड यूनियंस, कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह मिलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 27 करोड़ इस पर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। सिर्फ आधार कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ इस पर रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जो बेनिफिशरीज हैं उनको धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना शुरू कर रही है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीस्ट्रक्चरिंग इन रेलवेज। तो आपको पता है कि श्रेष्ठ क्या है, स्पेशल रेलवे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये आपके R&D डिपार्टमेंट के अंदर जो है रेलवे के आता था। इसको 2016 में ही बनाया गया था और रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये आता था। इसको जो है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट अब इसको जो है वो मर्जर कर रही है और इसका जो है टास्क जो है वो आगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही 32 और डायरेक्टरेट्स को RDSO के जो है उनको बंद करके 7 वर्टिकल्स के अंदर लाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक, इन सब के अंदर जो है इनको लाया जा रहा है। ठीक है, तो जियो टेक इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट जो है ट्रैक एंड ब्रिजेस के अंदर जो है उसको मर्ज किया जाएगा। और ये हो क्यों रहा है, ये सारे मर्जर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं संजीव सान्याल जी, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला था, रिकमेंडेशन दिया था ऑफकोर्स इकोनॉमिक सर्वे में, कि गवर्नमेंट बॉडीज़ की रैशनलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने क्या देखा है कि एक ही तरह का काम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स कर रहे होते हैं, तो आप उनको सबको मर्ज कर दो तो ये बेटर रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोर्टेबल डिसैलिनेशन यूनिट। तो MIT के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने पोर्टेबल डिसैलिनेशन यूनिट जो है वो बनाया है और ये लेस देन 10 kg है। अब ये होगा क्या, कैसे पानी को साफ़ करेगा? ये आयन कंसंट्रेशन पोलराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। अब ये टेक्निक क्या होती है? अब जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो वाटर के अंदर डाला जाएगा और उससे क्या होगा कि नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो जो आपके सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरिया या वायरस हैं, ये रिपेल होके जो है एक ऐसे जो वो वाले स्ट्रीम ऑफ वाटर में चले जाएंगे जो गंदा है। ठीक है, तो ये एक तरह से होगा क्या कि बिना फिल्टर की रिक्वायरमेंट के, आपको फिल्टर की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, आप सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो आपके पार्टिकल्स हैं उनको आप गंदे पानी को आप अलग कर दोगे और वो अलग से डिस्चार्ज हो जाएगा। जो साफ़ पानी है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है? तो ऑफकोर्स फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आप पता है ना, आपके RO फिल्टर्स आप रिप्लेस करते हो साल में कई बार। ठीक है, तो अब जो है पावर भी इसमें कम लग रही है। एक सेल फोन चार्जर जितनी पावर में ये जो है पानी आपको शुद्ध कर दे रहा है। और इसमें जो है ड्रिंकिंग वाटर जो है WHO के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से जो है अच्छा आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बहुत ही जो है अच्छे बेनिफिट्स हैं। दूसरा बेनिफिट ये भी बहुत बड़ा है कि पोर्टेबल है, ये इसको आप लेकर भी जा सकते हो कहीं पे भी, है ना। तो ये इसको MIT ने बनाया है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है उन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स जो है वो इस अगले सेशन से जो है वो उनको उनके लिए एप्लीकेशन मांगनी शुरू कर दी है। तो इसमें होगा क्या कि पहले आपकी बैचलर डिग्री अलग करनी पड़ती थी, फिर आपको B.Ed जो है, आप अगर जो टीचर बनना है तो उसके लिए आपको अलग करना पड़ता था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि आपको ग्रेजुएशन में ही आप ऐसे सब्जेक्ट्स ऑफर करो, इनको कंबाइन कर दो, ताकि जो है बैचलर्स डिग्री के साथ ही जो है टीचर्स को
स्पेशलाइज डिसिप्लिन में भी ट्रेनिंग मिल जाए और उनकी जो है टीचर एजुकेशन हो जाए, ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके लिए जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट लेगी और उसके बेसिस पर जो है एडमिशन्स लिए जाएंगे, ठीक है। सो अब इसमें होगा क्या कि पहले 5 साल लग जाते थे उनको बीएड करने में, क्योंकि पहले आप अलग से ग्रेजुएशन करते थे, उसके बाद जाके आप बीएड करते थे। उससे बेटर क्या होगा कि 4 साल के अंदर जो है स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स बनने के लिए ट्रेनिंग ले पाएंगे और उनको ऑफकोर्स ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स। तो इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स जो है उन्होंने 103% ग्रोथ जो है वो विटनेस की है 2013-14 और 2021-22 के पीरियड के बीच में। तो अब जो है 2021-22 जो है वो हमारे फार्मा सेक्टर का बेस्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एवर रहा है। और 10 बिलियन डॉलर का लगभग हम एक्सपोर्ट इस पिछले 8 साल में कर चुके हैं। 60% जो वर्ल्ड की वैक्सीन है वो इंडिया में बनती हैं और 20% जो जेनरिक मेडिसिन है वो भी इंडिया से ही आती हैं, ठीक है। इंडिया 3rd रैंक पर है वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम और वैल्यू के कंटेक्स्ट में इंडिया 14th रैंक पर आता है। अब क्यों ये ग्रोथ हो रही है? क्योंकि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है हमारी और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस है, ह्यूमन कैपिटल इसके लिए ट्रेंड है और इनोवेशन भी है हमारे में, ठीक है। तो अब हमारा जो ग्लोबल ट्रेड में शेयर है वो लगभग 5.92% जो है हमारे जितने भी हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें जो हमारा फार्मा का एक्सपोर्ट है वो 5.92% पहुंच चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री। तो नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री जो है वो लाइव आ चुकी है। ये पावर मिनिस्ट्री ने इसको बनाया है और ये एक सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ओपन एक्सेस पार्टिसिपेंट्स, ट्रेडर्स, पावर एक्सचेंजेस, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स, ये सब अपने आप को जो है वो रजिस्टर कर पाएंगे। और जो शॉर्ट टर्म आपको अगर ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट्स है इंटरस्टेट, तो उसके लिए वो यहाँ से ले सकेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन अब होता क्या कि कई बार आपके जो है जैसे डिमांड ज़्यादा चली जाती है ना, और आपकी सप्लाई उतनी नहीं है स्टेट में, तो आपको इंटरस्टेट ट्रांसमिशन करना है, तो आप उसके लिए नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री के थ्रू जो है देख सकते हो कि कहाँ पर एक्सेस अवेलेबल है और वहाँ से आप जो है ये अपना जो है लोड मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कौन जो है देख रहा है इसको नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री को? नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है पावर मिनिस्ट्री का, वही इसको जो है नोडल एजेंसी है इसकी इंप्लीमेंटेशन और ऑपरेशन के लिए। अब जो है फास्टर इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ये फैसिलिटेट करेगा और हमारे इवन जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनको भी ग्रिड में इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is eShram portal. So recently Ministry of Labour and Employment officials have confirmed that they have started to process the accident insurance claims by organized workers who have registered themselves on the eShram portal. So almost 27 crore registrations have been witnessed on this portal so far, and you know that extent of unorganized sector in India is very big. 90% of the total employed people in India are working under the unorganized sector, and Ministry of Labour and Employment also categorizes unorganized sector as those establishments or units which are engaged in the production of sale or goods, and they employ less than 10 workers. Also, they should not be covered in the ESIC and EPFO if they are to be called as unorganized sector workers. So basically any home-based worker, self-employed worker or wage worker who is working and who is not a member of ESIC or EPFO, then he or she is called the unorganized worker. So for that, of course, not just for unorganized workers but the citizens of India, of course, National Career Service was launched in 2015. So it's a 5-year mission mode project launched by Ministry of Labour and Employment, and it works towards bridging the gap between job seekers and employers. Okay, so all career related services including training and career counseling is provided on this portal. So it's basically a one-stop solution for all career related issues. So the next so this eShram portal, what is this eShram portal? It was launched by the Union Ministry for Labour and Employment in August 2021, and it provides a 12-digit unique number to the workers who will be included in the social security programs in the future. Okay, so basically the entire exercise is to include these unorganized workers into the social security programs of the government. So of course government is updating this registry by coordinating with the state governments, trade unions and even CSCs, that is the common service centers, and any unorganized worker can register himself or herself using the Aadhaar card number and bank account details. Okay, so the next topic is
is restructuring in railways. So you know that principal economic advisor of to the government, when he wrote the economic survey this year, he suggested that there should be rationalization of government functions in the country, and that's why, based upon that, the first action by the Indian Railways has been taken. The Special Railway Establishment for Strategic Technology and Holistic Advancement Department has now been closed, and it will be merged into other seven other verticals of the RDSO, because this Shrestha was working under RDSO for long-term railway research projects, but now it will be merged under the 7 verticals like administration, infrastructure. So basically sector-wise verticals have been found under this RDSO now. So even the Geotech Engineering Directorate will be merged with the Track and Bridges and Structures Directorate. So basically, a lot of departments of railways will be merged because you know that Sanjeev Saryal found that there are certain departments who are working on the same projects, and there of course, that's why what is happening is that our human resources getting wasted. So instead of having separate departments for or parallel departments for same purposes or similar purposes, why not just merge them so that they can work with coordination? So the next topic is portable desalination unit. So MIT researchers have developed this portable desalination unit, and it weighs less than 10 kg, and it can remove particles and salts to generate drinking water. So it is using a technique called ion concentration polarization, and what it does not use any filter, but it applies an electrical field which causes positively and negatively charged particles, including of course salt molecules, bacteria, viruses, to be repelled, and they flow with the a second stream of water. So with the dirty water, these impurities also flow away, and the remaining the remaining water is pure water. Okay, so what is the benefit of it? Of course, we do not need to replace filters because there are no filters here, and it also requires very less power, and it can operate with less power than a cell phone charger. Okay, so it also generates drinking water which exceeds the WHO quality standards, and it is cost effective also. Okay, so that is what and of course it is also portable, so you can take it somewhere else also for your drinking water purposes. So of course once it comes into the market, and if it is commercially viable, then we should also opt for it, because it is of course at areas like remote areas where there is resource crunch, and where there is a issue that we cannot replace the filters time and again, then in those areas this portable desalination unit would function very well. Okay, so the next topic is integrated teacher education program. So recently NCTE has inviting online applications for the 4-year integrated teacher education program, of course, which it was mandated under the National Education Policy of 2020, and this program is being offered in pilot mode initially, and it is basically a dual degree, the bachelor's degree and the B.Ed degree. So what you were doing today is that you had to do first your graduation, and then you have to do the B.Ed so as to be able to become a teacher. But now this dual major degree of bachelor degree plus B.Ed will be combined, and it will be a 4-year program, and it will enable the teacher, or the student teacher in this case of course, to get a degree in education as well as a specialized discipline which he or she had to take it during the B.Ed classes. Okay, so of course National Testing Agency will take the entrance examination, and based upon that admissions would occur. So it would of course benefit students. Earlier they had to finish this B.Ed course. First they had to go for 3 years of graduation and then 2 years of B.Ed, but now this 4 years of program will save 1 year of their career. Okay, so the next topic is Indian pharma exports. So recently it has been reported that Indian pharma exports have witnessed a growth of about 103% since 2013 and 14 to 2021 and 22. So 2022, 21, 22 is the best export performance year for the pharma sector of India. So in the last 8 years, we have also almost exported about $10 billion of pharma products, and 60% of the world's vaccines and 20% of the generic medicines in the world are coming from India. India is the third largest producer of pharma products by volume,
and 14th largest by value. Okay, so why? What is the reason behind this phenomenal growth? Of course, we have world-class manufacturing, robust infrastructure, cost competitiveness, and we have also have trained human capital and innovation. Okay, so in our total exports, in our total global exports, the pharma sector contributes about 5.92% of exports. Okay, so the next topic is National Open Access Registry. So National Open Access Registry of the Power Ministry has gone live from 1st of May, and it provides a single window electronic platform so that when there are short-term needs of a load dispatch or your electricity needs. So sometimes you know that some states are having this issue where their for short term, of course, their power demand is exceeding the supply. So then in that case they can access this National Open Access Registry, and they can see which place or which state in the country is having access from, and from that they can, or which grid is having access, then they can purchase that electricity for short term from that particular area. Okay, so it will provide information related to short-term open access in interstate transmission. So of course National Load Dispatch Center would manage it, and it would be the implementation agency for it. So of course it will provide faster electricity markets, and it will also allow integration of renewable energy resources into the grid. Okay, so because sometimes we know that when, like, these days there are many states which are witnessing this power crisis, there is a demand or supply gap, then they can of course use this facility of NOAR, National Open Access Registry, and they can meet their short-term needs using this platform. And in that case they can also use the renewable sources of energy, because that would also be linked with the this platform. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.